Good morning all of you and welcome to Gyan Jyoti online classes. And here today we will begin our new topic, that is topic number 20, adverbs. Okay, topic number 20, chapter of English grammar book, topic number 20, that is adverb. Okay. So before going to the main topic, okay, before going through the book, okay, let's discuss about what is adverb. So an adverb is a word that changes or simplifies the meaning of a verb, adjective, other adverbs. Okay, an adverb is a word that changes or simplifies the meaning of a verb, adjective, or other adverb. So it simply changes the meaning of a verb. Okay, by using adverb of manner, place, time, frequency. Okay, so it changes the meaning of a verb or adjective. Oh, okay. So this is your adverb. Okay. So note it down, the definition of adverb. Okay. Now look at your book, page number 131. Okay. So here there are some fill in the blanks are given. Read the hints and fill in the blanks. Each answer is an adverb. One has been done for you. Get it? Here are some questions given to you. Okay. So here we have to fill up the blanks. Like quite often it means frequently. Okay, quite often means frequently. Opposite of softly is loudly. Okay, opposite of softly is loudly. Without taking care it means carelessly. Okay, carelessly. Opposite of polite is rudely. Okay, let's write it. Opposite of softly is L dash dash D dash Y. What would be loud? Okay, L-O-U-D-L-Y. Loud. Opposite of what? Opposite of softly. While without thinking, without taking care means C dash R dash L dash 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 L Y. Okay, without taking care it means carelessly. C-A-R-E-L-E-S-S-L-Y, carelessly. Number 4, opposite of politely. Okay, what will be the opposite of politely? Opposite of politely will be rudely. Dash dash D-E dash Y. Opposite of politely is rudely. R-U-D-E-L-Y, rudely. Number 5, opposite of early dash A dash E. Okay, opposite of early will be your late. L-A-T-E, late. Number 6, without any delay. What does it mean? Without any delay, it means immediately. I dash dash E D dash A dash dash L Y. Immediately. I-M-M-E-D-I-A-T-E-L-Y. Immediately. Okay. Then comes number 7. Number 7 is opposite of upstairs. What will be the opposite of upstairs? That will be your downstairs. Okay. D-O-W-K. D-O-W-N. Down. S-T. Number 7. Dash. O-W. Dash. 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 A. I dash dash. So opposite of upstairs will be your downstairs. D-O-W and down. S-T-A-I-R-S. Okay. Number 8, with great cheer. What does it mean? With great cheer? Cheerfully. C dash E E dash dash U dash dash Y. C H-E-E-R-F-U-L-L-Y. So this is all about the blanks in the first page of your book. Okay, we put the adverb. Okay, so these are all your adverbs. Loudly, carelessly, rudely, late, immediately, downstairs, cheerful. So these all are your adverbs. Okay, whether it may be your adverb of manner, frequency, time, or place. Okay, then come to your main part, that is adverb of manner. So adverbs are broadly classified into adverbs of manner, adverb of
time, adverb of place, adverb of degree, adverb of frequency. Okay, so adverbs are broadly classified into adverb of manner, adverb of time, adverb of place, adverb of frequency. Okay, and adverb of degree. Okay, adverb of degree. Okay, so let's discuss one by one. Okay, let's discuss one by one the different types of adverbs. Okay. Okay, so there are 5 different types of adverbs that are adverb of manner, adverb of time, adverb of place, adverb of degree, adverb of frequency. So here we will discuss one by one briefly. Okay, first let's come to adverb of manner. So let's come to our first kind of adverb is adverb of time. Adverb of manner. Okay. So what is adverb of manner? An adverb that tells us how an action takes place is called an adverb of manner. Okay. An adverb that tells us how an action takes place is called adverb of manner. Adverb of manner क्या है? Adverb of manner क्या है? वो जो कि क्या है? Action कैसे होता है? वो हमको क्या है? बताता है. Okay. How the action takes place. How an action takes place. So adverb of manner defines how an action takes place. Okay, action कैसे होता है उसको क्या है? adverb of manner हमको क्या है? बताता है. So see the example. Mother nodded and smiled warmly. Mother nodded and smiled warmly. Sneha speaks softly. Please write carefully. Okay, so how the action takes place? Warmly. Sneha speaks softly. So how Sneha speaks? Softly. Please write carefully. How an action takes place? Please write carefully is your adverb of manner. And we usually add ly to the verb or adjective. Okay. We usually add ly. देखो लास्ट में सभी में ly है. Okay, so we usually add ly to the verb or adjective in case of adverb of manner. Okay, तो एक्शन कैसा होता है, ठीक है ना, तो हमको कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है ना, कैसा? वार्मली, सॉफ्टली, केयरफुली. कैसे करें? हाउ टू राइट केयरफुली. कैसे चलाना है? केयरफुली चलाना है. ठीक है ना, तो ये जो एक्शन, ये सब क्या एक्शन वर्ड्स है, ठीक है ना. तो ये एक्शन कैसा चल रहा है? चलेगा केयरफुली. ठीक है ना. ये एक्शन कैसे चल रहा है? नेहा स्पीक्स सॉफ्टली. नेहा कैसे बोल रही है? सॉफ्टली. वो एक्शन कैसा चल रहा है वो हमको कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर. गेट इट? देन कम टू आवर सेकंड टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम. सो एन एडवर्ब that tells us when an action takes place is called an adverb of time. An adverb that tells us when an action takes place is called an adverb of time. Adverb of time क्या होता है? Adverb जो कि क्या है? An adverb that tells us ना, वो adverb हमको बताता है कि वो action, ठीक है ना, कब होने वाले हैं. ऐसे adverb क्या है? Adverb of time बोला जाता है. ठीक है ना. So an adverb that tells us when an action takes place, एक्शन कब होने वाला हो, वो हमको क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है. ठीक है ना. जैसे राम went to the museum today. They will come tomorrow. Rahil had gone to bed. So these action words that tells that when the action will happen or takes place. ये जो एक्शन वर्ड है हमको बताता है कि क्या है, जो एडवर्ब क्या है, कब होने वाले, कब क्या है होने वाले, एक्शन कब होने वाले हैं. ठीक है ना. जो सेंटेंस है, ठीक है ना, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये सेंटेंस क्या बताते हैं कि कब क्या है एक्शन होने वाले हैं. सो दिस इज योर एडवर्ब ऑफ टाइम. आइडेंटिफाइज योर टाइम. ये सब क्या है? टाइम को बता रहे हैं. टुडे, टुमारो,
early. Okay, see this all denotes the time. ये सब क्या टाइम को सिग्निफाई कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। वो तुम लोग का वो ये क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके, so an adverb that tells us, okay, an adverb that tells us when an action takes place is called adverb of time. तो ये एडवर्ब हमको क्या बता रहा है कि ये जो एक्शन है वो कब होने वाला है, टुडे. ये जो एडवर्ब है, ठीक है ना, ये बता रहे हैं कि ये एक्शन कब होने वाला है, टुमारो. ये एडवर्ब बता रहे हैं कि एक्शन कब होने वाला है, अर्ली, ठीक है ना. ये सब क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम को डिनोट कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम. देन कम टू आवर नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस, एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके, okay, come to adverb of place. So this is our third number types of adverbs. An adverb that tells us where an action takes place is called an adverb of place. An adverb that tells us where an action takes place is called an adverb of place. So see the word where. Where it means कहाँ, ठीक है ना. तो वो एक्शन वर्ड्स हमको बताते हैं कि कहाँ पे वो एडवर्ब वर्ड, ठीक है ना, हमको बताते हैं कि एक्शन कहाँ होने वाले हैं, उनको क्या है एडवर्ब ऑफ क्या है प्लेस बोला जाता है, ठीक है ना. सीधे सेंटेंस, we saw cranes flying overhead, the ball rolled down the ground. Okay, let me fetch the book I left upstairs. Okay, so here shows the place. Okay, it shows the place overhead. Okay, overhead the ball rolled down. Okay, rolled down the ground. Let me fetch the book I left upstairs. These are some actual words. Okay, adverb word, adverb that shows where the action will take place. Okay, where the action will take place. So we saw cranes flying overhead. Overhead क्या है, वो एक प्लेस है, ठीक है ना, सर के ऊपर, ठीक है ना, कोई एक प्लेस है जहाँ पे क्या है ये एक्शन, ये चीज क्या है हो रहा है. We saw cranes flying, ठीक है, cranes flying ये कुछ काम क्या है कर रहे हैं, वो कोई एक जगह है, ठीक है ना, वो जगह है एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके, ओवरहेड, डाउन नीचे, ठीक है ना, नीचे क्या एक जगह है जहाँ पे क्या हो रहा है, बॉल इज रोलिंग, ठीक है ना, और रोल जो बॉल है वो क्या रोल डाउन हो गया, कहाँ पे नीचे. लेट मी फेच द बुक आई लेफ्ट अपस्टेयर्स. तो अपस्टेयर्स क्या है, ऊपर, ऊपर वाला जो लेयर है, ठीक है ना, ऊपर वाला जो फ्लोर है उसको क्या अपस्टेयर हो जाता है. तो अपस्टेयर जो है क्या है प्लेस है, कोई प्लेस है, ठीक है ना, अपर प्लेस, अपर, ठीक है ना, जो ऊपर वाला जो अपना जो फ्लोर है वो भी क्या उसको ही क्या अपस्टेयर बोला जाता है. सो लेट मी फेच द बुक आई लेफ्ट अपस्टेयर. तो अपस्टेयर क्या है एक जगह को क्या है आइडेंटिफाई कर रहा है. तो कोई भी अगर एक्शन वर्ड्स, ठीक है ना, कोई भी एडवर्ब अगर कोई जगह को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो वर्ड क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे. ओके, एंड वी यूजुअली सी वेयर, इट मींस कहां पे. ओके, वेयर द एक्शन विल टेक प्लेस. और we usually use the word where to ask the question. Okay, to ask question that where the action is going on. For in case of adverb of place, also for and we have discussed about the adverb of manner. Okay, then come to our fourth number type of adverb is adverb of degree. So an adverb that tells us the degree or extent of an action is called an adverb of degree. An adverb that tells us the degree or extent of an action is called an adverb of degree. Okay, so an adverb which tells us about the extent, to what extent the action is going on, that is known as the adverb of degree, ठीक है ना. तो एक्शन वर्ड एडवर्ब जो कि हमें बताते हैं कि किस कितना दूर तक, ठीक है ना, किस एक्सटेंट तक, कितना दूर तक वो एक्शन चलेगा, उसको क्या है हम एडवर्ब ऑफ क्या है डिग्री कहते हैं. Okay, this is the sentence. I enjoyed watching the show immensely. ठीक है ना, इमेंस बहुत देर से क्या है मैंने क्या है शो को क्या है देखा या देख रहा हूँ. Hari had just passed his vehicle when the tire started to deflate. ठीक है ना, जब टायर धीरे धीरे क्या पंक्चर होने लगा तो क्या है हरी जस्ट क्या है उसको पार कर देता है. जैसे वो देखता है कि जो टायर है वो डिफ्लेट हो जाता है, उन्हें पंक्चर हो जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या है
पार कर देता है। टू व्हाट एक्सटेंट, जस्ट मतलब इमीडिएटली, कुछ समय के लिए क्या है वहीं पर क्या है वो पार कर देता है। तो किस एक्सटेंट तक, जस्ट इमीडिएटली, ठीक है ना, वहीं पे उसको क्या है पार कर देता है। सो द एडवर्ब दैट टेल्स अस द डिग्री ऑफ एक्सटेंट, डिग्री और एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके, so we have discussed up to adverb degree, then the last one is adverb of frequency. So come to adverb of frequency, the last kind of adverb is adverb of frequency. So an adverb that tells us how often an action takes place is called an adverb of frequency. So usually adverb of frequency tells us how often an action टेक्स प्लेस, कितना बार क्या है वो एक्शन हो रहा है, कितना समय से क्या है वो हो रहा है। ओके, सो लुक एट द सेंटेंस, प्रीति वॉचेस द न्यूज़ डेली। ओके, दिस शोज द टाइम, ओके, दिस शोज द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन। ओके, दैट टेल्स अस दैट हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस। आई हैव मेट हर वंस, आवर ग्रैंडपेरेंट्स विजिट अस रेगुलरली। ओके, तो ये सब जितने भी एडवर्ब्स हैं वो शो करते हैं कि एक एक्शन कितना देर तक क्या है और कितने समय तक क्या वो चलता है और चलेगा या चल रहा है। ठीक है, प्रीति वॉचेस द न्यूज़ डेली, वो डेली क्या है न्यूज़ देखती है। ठीक है, वो एक्शन वर्ड क्या है वो डेली क्या है कंटिन्यू होता है। आई हैव मेट हर वंस, मैंने एक ही बार क्या है उनसे मिला, उससे मिला। ठीक है ना, एक बार जो है एक ही बार क्या है उसको मिला। दिस शोज द एक्शन दैट टुक टेक प्लेस ओनली वंस, एक ही बार उसको मिला। अब ग्रैंड पेरेंट्स विजिट अस रेगुलरली, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या हमको रेगुलरली क्या विजिट करते हैं। ठीक है ना, रेगुलर इंटरवल में हमको क्या है विजिट करते हैं। तो वो एक्शन वर्ड क्या है शो कर रहा है कि क्या है कितना बार वो एक्शन होता है। ठीक है ना, so to know the actions how often or where it take place, we usually use the word like how to ask question. Okay, we usually ask question using the word how in case of manner, time in case of time we use when, कब, where in case of place we use where मतलब कहाँ, and in case of adverb of degree what action मतलब कितने दूर तक, and adverb of frequency how often इसका मतलब होता है कितने बार। ठीक है ना, तो adverb of manner how कैसे वो एक्शन हो रहा है। ठीक है ना, when मतलब कब वो एक्शन हुआ, इट डिनोट्स द टाइम, कब मतलब समय, टाइम को क्या डिनोट करता है। where मतलब कहाँ वो एक्शन हुआ। ओके, व्हाट एक्शन कितने दूर तक क्या है वो एक्शन हुआ, और हाउ ऑफन कितने बार वो एक्शन हुआ। दिस आर ऑल एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है ना, ये हिंदी इसलिए लिखा हूं ताकि तुम समझ सको। ठीक है ना, हाउ मतलब होता है कैसे। ठीक है ना, एडवर्ब मैनर में एक्शन कैसे हुआ, when कब। ठीक है ना, तो एक्शन कब हुआ, एक्शन कहाँ हुआ, एक्शन कितनी दूर तक हुआ, और एक्शन कितने बार हुआ, ये होता है हम लोग जो है एडवर्ब ऑफ मैनर सब क्या डिनोट करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस, डिग्री, फ्रीक्वेंसी। ओके, देन कम टू द डिग्री ऑफ एडवर्ब। ओके, so rules for forming comparative and superlative adverbs. Okay, how can we convert a positive adverb into comparative or superlative forms? Okay, let's go with one syllable add er or est. Okay, the word with one syllable we have to add er or est to make it as a comparative one or superlative one. For example, see fast. Okay, fast becomes faster. We have added er to the comparative form of adverb. Okay, faster. Then it becomes fastest in case of your superlative form. Long becomes longer, and intensity becomes longest in case of your superlative form. Okay. Now ending in ly. So the adverb which ends in ly, जो adverb ly में end करते हैं तो उनके साथ हम क्या ऐड करेंगे, more और most का क्या है यूज करेंगे उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स के लिए। तो ब्रेव का क्या, ब्रेवली का क्या हो जाएगा, मोर ब्रेवली, मोस्ट ब्रेवली। ठीक है ना, ये कंपैरेटिव फॉर्म है। ठीक है ना, और ये क्या है हम लोग का सुपरलेटिव क्या है फॉर्म। ठीक है ना, स्विफ्टली का देखो, स्विफ्टली का मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली।
Okay, so this word ends in ly. So this adverb word ends in ly. For irregular adverbs, so there are adverbs which are not regular, irregular, that take place quite sometime. Okay, so for those words we have to use uh, so for those words there is no certain rules for those irregular adverbs like well. Okay, well becomes better, best. So here all the forms changed. Here the three forms are two forms are changed here. The comparative form and superlative form, they are not similar. Okay, later become less, least, far becomes farther and farthest. Okay, so in this way we can convert adverb into comparative and superlative form by using this rule. Okay, so hope you have understood it properly. ठीक है ना? तो वीडियो के बार बार देखना, जो डिफरेंट 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हमने पढ़े हैं उसके बारे में क्या डिटेल्स में क्या है, वीडियो को बार बार देखना, समझ में नहीं आएगा तो ठीक है ना, लास्ट में क्या हिंदी में समझाया हूँ। ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर को हम कैसे पहचानेंगे, बाय आस्किंग क्वेश्चन हाउ। ठीक है ना, हम आप क्वेश्चन क्या पूछेंगे, हाउ दैट एक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है ना, एडवर्ब प्लेस का वेयर, ठीक है ना, एडवर्ब टाइम का क्या, कैसे, कब। ठीक है ना, ये सब क्या क्वेश्चन हम पूछ करके है हम वो एडवर्ब को पहचान सकते हैं। ठीक है, so this is all about our today's class, chapter number 20, adverb of adverbs. Okay, next we'll further proceed to our next topic. Okay, so this is all about today's videos, and I request all of you to see all the videos each and every day and see the bit by bit all the videos. Okay, thank you and have a nice day. Be at home, stay home. So in our previous classes, okay, we have discussed about the degrees of adjectives. Okay, positive degree, comparative degree, and superlative degree. Okay, so here are some degrees. Okay, positive degree of adverb, comparative or superlative one. Okay, so positive degree. So the adverb is used in simple form. In positive case, okay, in positive degree, the adverb is used in simple form. Okay, while in case of your comparative degree, we compare between two things. Okay, we compare between two things, that is your comparative degree. Okay, and if the things or persons are more than 2, then we use the third form, that is your superlative form of degree. Okay, so comparing two things like who is good and who is better, if you compare between two, then you can use the comparative form. And if we have to compare among all the, okay, if there are more than 2, 3, 4 or a group of members are there, then we can use the superlative form to identify one people. Okay, which is the strongest one, which is the brilliant one. Okay, so we use the superlative form in order to identify which one is good or better or best, which one is best of them all. Okay, so this is all about your adverb of what degrees, that is your positive degree, comparative degree, and superlative degree. So not forget about, so you should not forget about the different kinds of adverbs. Okay, once again I am saying adverb of manner. We can ask question by putting the question like how. Okay, we can ask question by using the word how the action takes place. We'll get to know about adverb of manner. For adverb of place, we can use where the action takes place. We will get the answer that the action takes place where we get the answer. Okay, then for adverb of time, we use the word like when. Okay, so when the action takes place, we will get the answer. And for adverb of degree, okay, adverb of degree, to what extent the action has gone, we can use the word to what extent to get the answer. Okay, and for adverb of frequency, we use how often, कितनी बार क्या है वो जो एक्शन है वो हुआ है। ठीक है ना, उसको बार बार क्या है वीडियोस को पूरा क्लियरली क्या है देखना। ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, सब क्या है तुमको क्या है पता चल जाएगा इजीली। क्या है तुम रिकॉग्नाइज क्या कर लोगे एडवर्ब वर्ड्स को। ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है, इजीली क्या तुम रिकॉग्नाइज क्या कर लोगे। ओके, so this is all about our today's video. So I
I suggest you to please go through the books, okay, along with seeing the videos. Okay, I know that most of you are seeing our videos, okay, and most of you are not seeing. So at least everyone to watch all the videos each and every day. On a daily basis, you have to watch all our videos. Okay, by skipping, you can skip the videos by skipping. I don't think that you should skip the videos. Okay, but you have to see all the videos each and every day. Okay, so to know the detail of the class. Okay, so this is about this class, and we have finished our topic number 20, chapter 20, that is adverb. Okay, so thank you.